Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि गाजा पट्टी हजारों बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है। हर दिन सैकड़ों बच्चे और बच्चियां मारे जा रहे हैं। गौरतलब है कि हमास के आतंकियों द्वारा सीमा पार से किए गए हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी की है। ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीन में कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये तस्वीरें रूह कंपा देने वाली हैं। जिनमें लोग खून से लथपथ अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए भागते दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. We must act now to find a way out of this brutal, awful, agonizing dead end of destruction, to help end the pain and suffering, to help heal the broken, and to help pave the way to peace, to a 2-state solution with Israelis and Palestinians living in peace and security. The protection of civilians must be paramount. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. Today, the United Nations and our partners are launching a $1.2 billion humanitarian appeal to help 2.7 million people. That's the entire population of the Gaza Strip and 500,000 Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem. Some life-saving aid is getting into Gaza from Egypt through the Rafah crossing. But the trickle of assistance does not meet the ocean of need. And let's be clear, the Rafah crossing alone does not have the capacity to process 8 trucks at the scale required. The way forward is clear. A humanitarian ceasefire now. All parties respecting all their obligations under international humanitarian law now. This means the unconditional release of the hostages in Gaza now. The protection of civilians, hospitals, UN facilities, shelters and schools now. More food, more water, more medicine, and of course fuel entering Gaza safely, swiftly, and at the scale needed now. Unfettered access to deliver supplies to all people in need in Gaza now. And the end of the use of civilians as human shields now. None of these appeals should be conditional on the others. And for all of these, we need more funding now. आपको बता दें कि गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी दी है, जिसमें लिखा है, गाजा पट्टी के खिलाफ जारी आक्रामकता के दौरान इजरायली कब्जे में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो जाती है और 2 बच्चे घायल हो जाते हैं। गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण की शुरुआत के बाद से 3,900 बच्चे मारे गए हैं और 8,067 बच्चे अलग अलग चोटों से घायल हुए हैं। गाजा पट्टी पर हमला शुरू होने के बाद से इजरायली बमबारी के कारण मलबे के नीचे 1250 बच्चे अभी भी लापता हैं।